देखिबा how to download Python and installation procedure. ओके तो आम देखा डाउनलोड करने आम खोलिया आमर Google Chrome, your favorite web browser. Now open करवा Google Chrome, then search करवा Python, python.org. Okay, come python.org. Open Python website. देखो ये पाइथन रो वेबसाइट ओपन हो जाइए तो वेबसाइट एटा सो डाउनलोड्स रे क्लिक करिवा बहुत सारा डाउनलोड्स अछि तो हियर डाउनलोड्स रे क्लिक करिवा डाउनलोड्स रे क्लिक कला परे और रिलीज सोर्स कोड विंडोज मैक अदर प्लेटफॉर्म for Windows 10 click here Windows and Python release for Windows here latest Python 3 release Python 3.8.5 latest version of Python 3.8.5 okay come to down click here download here download Windows executive installer click here download executable installer click here so double click on that downloaded file okay after downloaded देखो तो ये बड़े गोटे स्क्रीन आसो तुम पाइथन फॉर विंडोज इंस्टॉल पाइथन 3.8.5 मोर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिलेक्ट इंस्टॉल now to install Python with default setting or choose customize to enable or disable देखो ये डेटा अच्छी install now कला पर इटी मोर लोकेशन रे सेव हो otherwise कस्टमाइज इंस्टॉलेशन तुम चाहे तुम लोकेशन को चेंज कर परिवो तो मु मोर लोकेशन मोर डिफॉल्ट लोकेशन रखिया पे चाहूची तो सो मु डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ रे क्लिक करी बट वन थिंग रिमेंबर जब तुम इंस्टॉल नाउ क्लिक करिया पे चाहूचो एटी चेक करिवो ऐड पाइथन 3.82 पाथ तो एटी एटा को सिलेक्ट करिवो बॉक्स टा को चेक कर देबो ठीक करिवो क्लिक हियर देन मन रखतो ए पॉइंट फर्स्ट इंस्टॉल टाइप रे add python 3.82 path एटा को चेक करिवो देन इंस्टॉल नाउ रे क्लिक करबा ओके यस very a few seconds to take set of progress installation is progress okay setup was successful here close now Python successfully installed in my machine so देखिबा चेक करियो स्टार्ट मेनू रे Python को देखो here recently added Python 3.8 module the document file 64 bit ro IDE अछि and
here expand କରିବା ଏଠି Python ର console ଅଛି तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ID ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କି maximize a little bit small text size की little bit big here click here of options then configure IDE okay size to change your text size here font face different and size then size to 16 or 16 okay change like this and also if you want to bold your text you can check your bold okay then click ok then click apply okay okay I think little bit zoom text size here ଗୋଟେ hello world print କରିବା python ରେ the python language ରେ ତ ଲେଖିବା hello world print କରିବା print 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 hello world enter okay success hello world तो गोटे नया फाइल नवा सपोज गोटे न्यू फाइल क्रिएट करवा एंड न्यू फाइल क्रिएट करी गोटे पाइथन न्यू पाइथन प्रोग्राम करवा तो सो फाइल मेनू हियर क्लिक फाइल मेनू न्यू फाइल like a new file then print same program and just repeat same program print hello world sorry and after coding you click here run for running but before that you save the file menu save तो save location मु desktop दे दूची here hello dot py save after save you can run here click run and run module or if you can press F5 from keyboard run module okay success hello world okay close this IDE if you want to also run console again click this is the Python console here also type print first one IDE and this is the console print hello world here also output coming successfully run if you want to check your Python version from command prompt you can open also check that you can click here or search command prompt cmd and open cmd you type
Python version, Python version. You can check your Python version, Python 3.8.5. Also you can check your pip hyphen version. Okay, and also you can create your programs, Python programs from command prompt. To type Python. Okay, here same entering or showing your hello world. Same print hello world. The output coming hello world. You can try your ID for or ID this command prompt or Python console. Three ways you can run your Python program from Python ID, from Python console, and also from CMD command prompt. Okay, this is the Python downloading and installation process with all hello world code printing. Okay, thank you.